force, they are entering the job market, and they are not having the required or requisite skills to benefit only from the services sector. That is where the importance of manufacturing growth. And there is also an absolute need right now, though we have fulfilled most of the basic requirements of the larger sections, almost close to what we call 100%, but it is the next set of things like bringing the inequality and creating decent jobs. In that context, there is a need to move large chunk of labor force from agriculture to manufacturing. So in this context, it's absolutely important that we work on this. The second point is, India is in a very bright spot. Today, average Indian age is 29. The China is 39, Europe is 42. The whole world is aging when India is young and aspirational. In fact, most of the countries, they have given away labor-intensive manufacturing because of unfavorable demographic composition for them. And this is an opportunity for India because we have the favorable demographic composition. And from 29 to 39, it takes 30 years. So next 30 years belongs to India. In fact, some of the reports have suggested that total population of all these countries would be having negative. The total population of China would go down almost more than 60% by 2050. So what we have the labor force, and unless until we improve the productivity of the huge manpower we have, we cannot really reach what we aspire to be. So that is where the role of manufacturing sector. The second point, why it is also the suitable time or to capitalize this opportunity. We have been going through geopolitical issues. Lot of multinationals, lot of countries are worried about stable supply chain, and there the concept comes as China plus one. And India is very well placed. All these labor-intensive sectors in manufacturing vacated by China or others manufacturing giants are going to smaller places like Vietnam, Bangladesh, Mexico. They don't have the market to offer. They don't have the endowments like India has. So that is where it is an opportunity to capitalize. And also if you look at the growing economy, our domestic demand, see, I'm sure you go through this information that, okay, the trade deficit with China is increasing, with other countries increasing in manufacturing. What are we importing from China? Capital goods, intermediate goods. It's 88% of the total imports. So there is huge demand right there in Indian economy. Even we don't have to depend on others. So that is where I think we need to focus on manufacturing. We have been trying to accelerate manufacturing. There are so many policy initiatives, whether it's Make in India, Gati Shakti, Digital India, performance-linked incentives. We have taken initiatives, but however, the success is kind of less than the desired. Still, we have the share of manufacturing 17%, where we are supposed to reach 25%. That is where the momentum. And when it comes to industries, we are doing well in few industries, whether it is automobiles, very recently in electronics and mobiles, which is part of it, information technology, but in certain industries where our strength lies is basically labor-intensive sectors, whether it is textile, headwear, footwear, leather, and all these labor-intensive sectors. I think there are a lot of opportunities to capitalize. In this context, the role of states really go up. Geographically, and when it comes to the project implementation, it is always the states where actual implementation takes place. The purpose of this workshop is to take the best practices and also analyze the gaps that are coming on the way of manufacturing. And the whole purpose is to send out a message to states what they need to do. And of course, in the second session, we'll have representatives from different industries who would share the success, the issues, and what they expect from governments, both from the center as well as state. It's a very special day, I must tell.
we're really privileged and honored to have Honorable Chief Minister. I think his presence adds significant value to this event. And we have distinguished guests, two great personalities, honorable members, Dr. Saraswat and Dr. Birmani. They are eminent scholars and policymakers. They have been part of the policy making for decades. In fact, we have all, like most of us, have grown up reading and going through their contributions. I'm very happy that we have Mr. Mukesh Chand Gupta here, who would really take forward the message. And of course, today the welcome address was supposed to be given by the CEO of NITI, Mr. B.V.R. Subramaniam. We missed him, but he's the person who suggested that let's do it in Bhopal. I think it's time for Madhya Pradesh to take up in manufacturing. So it is his initiative, and we are sorry that we missed him. And finally, I really thank all esteemed or distinguished members and participants coming from faraway places. Thank you so much. I hope we'll have a very productive and rich discussions in the coming two sessions. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभाकर साहू जी कार्यक्रम के परिचय के लिए। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। और आपने प्रदेश के विकास के लिए सुशासन के अर्थ को चरितार्थ किया है और निरंतर आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। तालियों के साथ हम आमंत्रित करें माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन के लिए। नीति आयोग द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में, और इस वर्कशॉप का विषय भी बहुत अच्छा है, मैं समूचा मंच और आप सबको बधाई देना चाहूंगा। एक बार करतल ध्वनि से पूरे मंच का अभिनंदन कर दें। भारत के निर्माण में, खास करके विकास में प्रदेश की भूमिका, सहभागिता, ये सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत अच्छा है। और मैं एक तरह से आपके माध्यम से इस आयोग के बनने के कारण से यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सुशासन को लेकर के ये कितनी सुंदर दृष्टि रखी। अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, हम सब मिलकर के, जिनने शासन के सूत्र हाथ में लेने के बाद कितने प्रकार से अलग अलग सेक्टर में काम किया है। और अब जिस प्रकार से हम देख भी रहे हैं, कभी कभी अपन कल्पना करें 2014 के पहले के दौर की बात करें, किसी दल विशेष की बात न करते हुए, यद्यपि पहले पंचवर्षीय योजना चला करती थी, उस पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हम अपने अपने क्या क्या कैसे कैसे टारगेट लेते थे, लेकिन उसके कई बार हम ही मजाक बनाते थे, मखौल उड़ाते थे कि ये क्या है, कैसा होगा, कितना होगा। और अपने लिए तो हम अपने पता नहीं वो उस गुलामी के काल से कितने साल तक बाहर नहीं आ पाए। भारत में तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये टारगेट रखने के लिए रखते हैं, इसका क्या लेना देना है। ये ज्ञान विज्ञान की बात मत करो, सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार चलाने के लिए सरकार के अलग तरीके होते हैं। और एक दो धारा अपने आप पूरे देश में दिखती थी, और उसके माध्यम से कई बार हमारा यहाँ का जो टैलेंट है वो स्वाभाविक रूप से यहाँ अपने घुटन महसूस करता था। और ऐसा लगता था कि यहाँ का ब्रेन, सारा दुनिया हमारे ब्रेन से आनंद ले रही, और हमारे यहाँ सारा जो है पता नहीं अंदर में अच्छा होते बावजूद भी सब खराब है, ऐसी भावना जो बनी थी। या इनको कोई संभालने वाला ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई सुधारने वाला नहीं। सरकार के लेवल पे तो एक बड़ा अच्छा एक पुराना चुटकुला भी चलता था। एक जगह ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा था, मंत्री जी अपने सिर का ऑपरेशन कराने में लेटे हुए थे टेबल पे ऑपरेशन करने के बाद उनको बेड तक पहुंचाया, उनका होश आया, और होश आने के बाद में मंत्री जी के पास डॉक्टर दौड़े दौड़े आए कि साहब आपको वापस ले जाना है। बोले क्यों? बोले आपका वो जो ब्रेन निकाला था वो तो बाहर ही रह गया और खोपड़ी वैसे ही लगा दी आपकी।
तो मंत्री ने कहा जरूरत नहीं है, लेकिन बोले मुझे वित्त मंत्री बना दिया है, वहां खोपड़ा नहीं लगाना। तो ये हमारे यहाँ इस प्रकार से जो मजाक बनते थे, चुटकुले चलते कि किसी को मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो और की पोस्ट पर बिठाओ, तो बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना, जो चल रहा उसको चलाना, और चलाने वाले अलग और उनको दिखाना कुछ और। ये जो मजाक बनते थे, इन सब का जवाब मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूं, और एक तो क्या ऐसे कुछ उदाहरण और भी जाएंगे। एक दुविधा बताऊंगा आपको इसके पहले की। आप अंदाज लगा लो कि हमारे यहाँ इसी देश के अंदर, मैं नाम भी ले सकता हूं क्योंकि फाइनेंस की बात चल रही, नीति की बात चल रही, व्यवस्थाओं की बात चल रही, सुव्यवस्थाओं की बात चल रही, और ये बात भी सही है कि 91 की सरकार में यशस्वी अभी जिनको भारत रत्न मिला है, नरसिम्हा राव जी, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और उस समय के एक तरह से इन व्यवस्थाओं के लिए मनमोहन सिंह जी की उस समय गवर्नर करके बाद में वित्त मंत्री करके आए, उनने काफी बदलाव भी लाए। लेकिन मनमोहन सिंह जी कहाँ चूक कर गए मालूम नहीं पड़ा। आप अंदाज लगा लो, एक चाय वाले ने कह दिया कि बिना पैसे का भी खाता खुलता है, कितनी बड़ी बात है। खाता खोलने में कोई पैसे की जरूरत लगती है? अब ये एक छोटा सा कदम लेकिन कितना बड़ा काम कर देता है कि अगर हम जो बेनिफिशरीज है, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट को देना है, ये बीच के सारे हमारे व्यवधान खत्म कर देना। अन्यथा राजीव गांधी जी को याद करो, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया भेजता 15 पैसा पहुंचता है। तो ये जो बीच में डाका डल जाता था, इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ये जो अंदर का अंतर्मन था, आप कभी याद करो, मैं मोदी जी की तारीफ करता हूँ, कई बार मेरे को लगता है ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं छोड़ू कैसे। नोटबंदी करना, नोटबंदी करना ये कितने कलेजे के काम। नोटबंदी वो भी ऐसे देश में जब द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था एक साथ इकट्ठा होकर विपक्ष भी मारता है, कितनी प्रकार के खतरे थे, पूरी सरकार एक तरह से दांव पे लगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जरूरत है, हमारे यहाँ हम कर सकते, करके दिखा सकते। ये उसी प्रकार से कोविड के समय उन्होंने तालाबंदी की घोषणा कर दी, लॉकडाउन की घोषणा कर दी। अब कोई प्रधानमंत्री का काम है क्या? लेकिन शासन की व्यवस्थाओं को चलाने के सूत्र जिनके हाथ में, जिनकी स्पष्ट दृष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही, जनता का विश्वास, और इन व्यवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार से काम कर दी। अभी थोड़े दिन पहले हमारे अपने माइनिंग सेक्टर में मध्य प्रदेश को पहला नंबर मिला। क्यों? क्योंकि हमने नीलाम किए अपने खदानों के भूखंड, इतनी पारदर्शिता से कि ये सुशासन पहले क्यों नहीं आ सकता था। ये नीतियां आपके नीति आयोग के माध्यम से हमने बनाई। मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा कि आपने जो बताया हम लगातार करते जा रहे हैं, जो कर सकते हैं उसी प्रकार से कर। इन नीतियों का क्रियान्वयन ठीक से करना, सरकार के बीच में बार बार ये संवाद चलाना, लगातार इसमें इन्वॉल्व रहना, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, जो हमने ऐसे ऐसे सेक्टर, किस किस सेक्टर में बढ़ सकते हैं उसकी बात करना। अन्यथा सरकार को कहां फुर्सत है इन सारी बातों को करने की। सरकार को सरकार चलाने के लिए वोट लाना, वोट लाके चुनाव जीतना, चुनाव जीत के फिर अगली सरकार में लग जाना, ये दो ही तो रास्ते हैं। एक सरकार बनी, अगली सरकार की बात करो। लेकिन बनी हुई सरकार को, शासन को सुशासन में बदलना, जवाबदेही के साथ करना, और ये हमारे आपके नहीं, हमारे यहाँ अतीत से परंपरा थी। सम्राट विक्रमादित्य 32 पुतली वाला सिंहासन, विक्रमादित्य का सुशासन राम राज्य की याद दिलाता था। राजा भोज का सुशासन सबको याद है। और ये नहीं, ऐसे कई नाम है, सम्राट अशोक से लेकर कई नाम है, जो शासन के सारे सूत्र, अरे लोग हमसे सीखने आते थे। दुनिया में कहा कोई ऐसा सिखाने वाला था। अर्थशास्त्र के मामले में चाणक्य के बारे में क्या कहा जाता सबको मालूम। हमारे यहाँ बड़े बड़े नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, ये गुरुकुल हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, ये नई भी नहीं। लेकिन नजरअंदाजी कारण से, अपनी इस ताकत को खुद न पहचानने के कारण से ये जो दुर्दशा हुई थी, परमात्मा की दया से वापस सुशासन के लिए माननीय मोदी जी की सरकार बनी है। और मोदी जी की सरकार नहीं बनी, एक तरह से प्रजातंत्र की अपनी ताकत को पहचानने का एक यज्ञ चल रहा है, उसमें ये आहुतियां डल रही है। इन आहुतियों के माध्यम से हमको उसकी सुगंध भी आ रही है और उसकी ताकत भी हम जानते हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ओजस्वी वचनों के लिए, विचारों के लिए।
और कार्यक्रम में आगे मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय श्री वीके सारस्वत जी, मेंबर नीति आयोग से, कि वे अपने वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। हम आभार देना सभी को अभिभूत किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और